Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Core industries output grows 8.9% in the month of June, reversing all its gains in the last hour of trade. Sensex falls 66 points, Nifty sheds 15 points. Rupee weakens by 13 paise against the US dollar. And international commercial flights remain suspended till August 31st, says Director General of Civil Aviation. देश में इस वर्ष जून महीने में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई। शुरुआती तेजी गवाकर आखिरी समय में बिकवाली बढ़ जाने के साथ घाटे के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 66 अंक लौटका, निफ्टी 15 अंक फिसला। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 13 पैसे कमजोर। और नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। In our top story, the combined output of the 8 core sector industries rose by 8.9% in the month of June as compared to a year ago. Core sector output had risen by 16.3% in the previous month of May. The data released by the Commerce and Industry Ministry today showed production decline in just one out of the 8 core sector industries, that is crude oil. In June, production of finished steel grew 25%. Cement production rose by a smaller margin of 4.3%. Gas production rose by 20.6% in June, and electricity generation grew 7.2%. Puneet, a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Puneet, what is the core sector output telling you in terms of the demand for commodities, which is an input for industry? And for that matter, the output of the businesses concerned, are we looking at building and construction? Are we looking at roadways? Are we looking at heavy machinery, manufacturing? What is it that we are looking at that is consuming so much of the commodities and inputs of business? So, Arjun, the core sector industries, as the name suggests, are about 8 sectors that we take into account, which is steel, cement, crude oil, gas, electricity. Now, these are the basic components of all manufacturing in the country or industrial activity. And core sector index actually comprises of 40% of the industrial index production, the IIP that we look at. So, it basically tells us what is the status of the industrial sector in India, which comprises of manufacturing as well as services. So, both manufacturing and services consume these basic inputs, electricity, steel, cement, all these services, and therefore we call them core sector. A targeted industry, Puneet, the targeted industries which are consuming all this material. These are all manufacturing, like I said, manufacturing as well as services, because electricity is consumed by both. But largely you can say it represents the growth or the growth of raw materials basically in the manufacturing sector. So if we look at the growth, which is 8% for the month of June, in fact, May was slightly higher, and we have revised figures for April, which is also much higher at about 20-odd%. So clearly the core sector is recovering in this quarter, even when there was a second wave of COVID, and there were partial lockdowns across the country. So I think the data that we have, approximately for the quarter, if you look at, we have growth of about 15-16%. It tells us that manufacturing activity in this quarter also was fairly okay. It grew from last year. Of course, last year was no benchmark in a sense. But I would say basically the message is that the economy continues to be resilient. It continues to grow. And the manufacturing sector, which had taken a lot of hit last year, that is coming back on rails. That is a broad message.
पुनीत जी, यदि हम मई से तुलना करें जून का, तो मई में 16.3% की वृद्धि हुई और जून में अपेक्षाकृत यानी कह लें कि ठीक आधा 8.9%। जो कोविड की स्थितियां रहीं, दूसरी लहर, ये इसका प्रभाव माने या कोई और कारक रहा? देखिए मनोज जी, पहली बात तो जो कंपैरिजन करते हैं ये पिछले साल के महीने से करते हैं। तो पिछले मई से इस साल का मई में, तो पिछले मई में तो करीब करीब कंप्लीट लॉकडाउन था देश में। तो इस साल वो बेहतर थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ रही। जून में लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एक्टिविटी शुरू हो गई थी, तो ऑलरेडी बेस इफेक्ट जो था वो ऑलरेडी ऊपर था जून लास्ट ईयर। तो इस बारी मैं ये कहूंगा कि जो 8% ग्रोथ है इस जून में वो अच्छी है, क्योंकि बेस इफेक्ट में भी लास्ट ईयर जून में एक्टिविटी शुरू हो गई थी। उसके बावजूद डेफिनेटली जून में हमने देखा कि थोड़ा स्लो डाउन रहा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। पर हमारे पास अगेन जुलाई का डेटा अब हमारे सामने क्विक एस्टिमेट्स हैं, और ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में भी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो काफी ठीक चली है, उसमें पिकअप रहा है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर डेटा जो इस वक्त थोड़ा सा स्क्यूड है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, पर अगेन मैं कहूंगा कि ब्रॉडली स्पीकिंग वी आर डूइंग फाइन and we should do well. Ji, what is your estimate of the IIP data that will come up now that this is 40% of the IIP figures that we expect in terms of the combined inputs? So Arjun, if we look at the what happened in industrial production for the last quarter of 2020, and we look at now, my own estimate is that we will see a production of IIP jump of about 15 to 20% in this quarter when we get the data. आइए चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज कारोबार हुआ। खासतौर से कारोबार के अंतिम प्रहर में बिकवाली काफी देखी गई, जिससे प्रमुख सूचकांक 0.1% नुकसान में रहे। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के प्रति निवेशकों का रुझान बना रहा और इनका प्रदर्शन सेंसेक्स निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 66 अंक यानी 0.1% घटकर 52,587 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंक यानी 0.1% कम होकर 15,763 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों की लिवाली आज शेयरों की इनकी अच्छी रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई। And the stock markets, the Sensex at the BSE fell 66 points, 0.1% to end at 52,587 today. Nifty at the NSE shed 15 points, 0.1% to 15,763. But the broader market outperformed the Sensex with the BSE mid-cap index rising 0.6% and the small cap index climbing 0.8%. Sectorally, on the BSE, the healthcare index jumped 2.3%. Utilities and auto indices climbed 0.9%. Industrial index rose 0.7%. Consumer durables index added 0.5%. And realty and the consumer discretionary index gained 0.4% each. Among declining indices, the metal index declined 1%. Energy index dropped 0.8% and Bank X fell 0.4%. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 42 पैसे के स्तर पर आ गया। पुनीत जी, हम आपका ध्यान बाजार की आज की गतिविधि पर आकृष्ट करना चाहेंगे। खासतौर से अंतिम क्षणों में हमने देखा कि बिकवाली अपेक्षाकृत बढ़ गई, जबकि ओवरऑल जो रुझान रहा था वह लिवाली का रहा था। क्या प्रमुख कारण रहे? मनोज जी, देखिए करीब ये सेकंड वीक इन अ रो है, दूसरा हफ्ता है, जबकि ओवरऑल जो हेडलाइन इंडिसेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें हमने मामूली गिरावट देखी है। बाजारों में इस वक्त कंसोलिडेशन का माहौल है। हालांकि सेक्टोरली हम देख रहे हैं अलग अलग परफॉर्मेंस है। जैसे मेटल क्षेत्र इस सप्ताह करीब 8% इंडेक्स जो है वो बढ़ा, लेकिन हमने देखा कि ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और बैंकिंग, इसमें हमने इस सप्ताह गिरावट देखी थी। तो क्लियरली मार्केट में हालांकि ओवरऑल हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वहां पर कमजोरी है, लेकिन सेक्टर ऐसे कुछ हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ सेक्टर जहां बहुत पहले बढ़त देखी थी वहां प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन दूसरा जो एक बड़ा कारण आज का बाजार का शुरुआती दौर अच्छा था, हमें लगता था कि बाजार आज अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट खबर आई दोबारा से कि चाइना ने दोबारा से कुछ स्टेप्स उठाए हैं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के खिलाफ, और वो अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज को अब रोक रहे हैं कि वो बाहर लिस्ट ना करें और वहां से पैसा ना उठाएं। तो इसके चलते जो विश्व के बाजार हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वहां बहुत नर्वसनेस है
और यूएसए में भी जो फ्यूचर्स हैं डाउ जोन्स के और नैस्डैक के, खासतौर से नैस्डैक फ्यूचर्स, वो काफी गिर गए थे। तो एप्रीहेंशन था इन्वेस्टर्स को कि भाई कोई हमारे जो मंडे को जब बाजार खुले तो कोई स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो, और उसके चलते मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हुई और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहा। तो खासतौर से मैं कहूँगा डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हमारे काफी स्टेबल हैं, फंड फ्लोज भी ठीक है, हालांकि एफआईआई जो है काफी सेलिंग कर रहे हैं भारत में, लेकिन डोमेस्टिक इनफ्लोज अच्छे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। पर मुझे लगता है कि वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन दिस ग्लोबल मार्केट। अगर ये चाइना का जो स्टेप्स ले रहे हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ, अगर वो कुछ ज्यादा उसका असर आता है ग्लोबल मार्केट पे, तो शायद हम थोड़ी और सेलिंग देख सकते हैं एफआईआई के द्वारा। Puneet, the pharmaceutical index went up by 2% and as much as 3.6% in select stocks. What were the reasons now? Is there an expectation of a third wave of COVID-19 or there's a demand for generic products across the globe? So primarily, Arjun, today the Pharma Index went up because Sun Pharma, which is a very large pharma company, and that went up by about 6-7%. And because the results came out very well, they had a jump of about 60% in their profits year on year. So clearly the markets kind of celebrated that. What happened, in fact, if we look at the whole week, that Pharma Index was actually down by more than 1%. Largely because Dr. Reddy's, which had come out with results, they were disappointing, and Dr. Reddy's had fallen very sharply earlier this week. So to that extent, I think the results that we are watching are kind of mixed bag from pharma companies. Market had already taken up the share prices a lot in anticipation of good results. The market expected these companies to come out with very good results. So all these stock, particularly pharma company stocks, had gone up a lot. And I think again, this is a kind of profit booking. People are just taking some money off the table wherever they have large gains. They are booking profits. They want to sit back a little bit, watch where the market goes, and then probably reinvest. So my own sense is that this is more of a profit booking rather than a change in direction for the index. Puneet, has there been a change in the buying interest, the thinking behind it by FIIs and DIIs? Are they looking at the profit and loss statement of a typical disclosure earning statement of a company and not the balance sheet so much? And they're also looking at the reduction of, in fact, the increase in margins rather than revenues. Is that what the current thinking is when they are looking to buy into stocks in the Sensex and Nifty? So Arjun, you have raised a very sensitive issue with investors right now, because some companies, some internet companies which have very bad profit and loss account, they seem to be doing very well on the stock markets, just because the balance sheets are very good and there's a lot of capital on their books, and they seem to attract investors. Whereas a lot of other investors believe that we should look at the profit and loss account rather than the balance sheet in terms of investing. So this is an ongoing debate. Right now, I think foreign investors or large investors are backing companies with growth rather than profits. In certain sectors, in this sector particularly. So I think that debate is going on, but my own sense is that in the long term, stock prices are slaves of companies' earnings rather than the balance sheets. So the price to earnings is what's been looked at, not the price to book. Absolutely. I think that is the long-term objective for a company to make profits. They can raise a lot of capital, but does not mean that they will turn profitable in future. So I think we will know this outcome of this debate, but for the time being, the balance sheet seems to be winning in certain cases. आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार। कोविड प्रसार की आशंकाओं के मद्देनजर एशियाई बाजारों में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.4% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% नीचे आकर बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.8% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% नुकसान में रहा। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में सरकार की ओर से कोर सब्जेक्ट में शिक्षा संस्थानों से संबंधित लाभप्रद कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से वैश्विक निवेशकों की ओर से इनके शेयरों की बिकवाली की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर पर कार्रवाई की थी। यूरोपीय क्षेत्र की ओर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.8% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.1% की कमी थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.8% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था।
In more news, Eurozone inflation rose faster than expected this month, moving decisively past the European Central Bank's 2% target, with much of this year's surge still to come. Data from Eurostat, the EU statistics agency, showed today inflation in the 19 countries sharing the euro accelerated to 2.2% in July from 1.9% a month ago as energy prices continue to surge. Analysts say inflation is expected to accelerate further in the coming months and will likely peak over 2.5% towards the end of the year, with risk skewed towards higher figures. Puneet, would you say that the argument that holds for the U.S., their fears of inflation, is the same for the Eurozone as well, with the discount rate, the rate at which the central banks lend to commercial banks is below 1%. Do you see that fear continuing? They don't want high interest rates because it would impact their consumer spending, which is driving business in Europe. So, Arjun, you're right. I mean, right now, although inflation is going higher in US as well as in Europe, the truth is that the central banks in these places are willing to tolerate higher inflation for the time being. They have said that we are willing to tolerate high inflation until the end of this year, and they believe that inflation will begin to come down sometime next year. Having said that, I think, and US Fed has actually very clearly said that they will not raise rates until 2023. So at least for 1.5 years, they want to keep rates down because they want to prioritize economic growth over inflation fears. However, I think in case inflation goes any higher, then there will be a real threat to the stability, their monetary stability, and they will want to increase interest rates. We don't know what will happen. Honestly, it's very difficult. Right now, I think oil prices are kind of peaking out at $70, $75, but commodity prices like metals, whether it is steel or it is aluminum or it is copper, these prices are definitely still at risk of going higher, and therefore I think inflation continues to be a threat. Yes, if you ask me, I think this is the most important thing to watch for all equity investors in future. If inflation does rear its head significantly higher, then I think they will have to raise rates, and that will pose a serious threat to equity markets, which are rising right now. So I think a few months down the line, maybe 3, 4, 5 months later, we will have to address this question very seriously. पुनीत, हम आपका ध्यान चीन की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे और वहाँ जो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जो कंपनियां हैं, संस्थान हैं, उन पर जो कार्रवाई की जा रही है उसे पूरी तरह आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि यह कार्रवाई किन परिस्थितियों में हो रही है और जो विदेशी इनमें धन लगाने वाले संस्थान हैं उनकी ओर से बिकवाली के पीछे मुख्य कारण क्या है? मनोज जी, बिल्कुल ये बहुत एक बड़ा इफेक्ट है और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि वो उसके बारे में, और मैं थोड़ा सा जानकारी भी देता हूं, लेकिन वो सब इस चीजों को बहुत ध्यान से देखें। चीन ने जितनी उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, करीब 100 कंपनीज ऐसी हैं जो यूएसए में लिस्टेड है चीन की, और ये सब कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं। $100 बिलियन से ज्यादा इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चीन ने ये कहा है कि जो ये कंपनीज हैं, इसमें काफी, इसके अंदर कुछ इंटरनेट कंपनीज हैं, कुछ इसके अंदर उबर जैसी जो राइड हीलिंग कंपनीज है, डीडी ग्लोबल जैसे जिसका नाम है, उन कंपनीज को, जो एजुकेशन कंपनीज है, एजुकेशन कंपनीज को, तो इंटरनेट एजुकेशन कंपनीज को चीन के पॉलिट ब्यूरो ने कहा है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, उनको ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करना होगा। तो यानी उनका बिजनेस जो है वो बिल्कुल करीब करीब खत्म कर दिया उन्होंने। साथ में ही आज भी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई चाइना में और उन्होंने फ्रेश कर्व्स लगाए हैं। चीन की जो इंटरनेट कंपनी है उनको कहा है कि आप बाहर अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कर सकते और पैसा आप वहां से रेज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उथल पुथल इंटरनेट के क्षेत्र में और पूरे, और अमेरिका में भी अब उन्होंने जो चीन की कंपनी वहां पैसा रेज कर रही थी वो उनको करीब करीब उन्होंने बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक पूरा रीओरिएंट होगा ग्लोबल सिचुएशन, और ये सब कंपनीज ने काफी पैसा अमेरिका से उठाया था, तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान भी हो रहा है इन कंपनीज में। वहां पर एक चीन का एक ग्लोबल ड्रैगन इंडेक्स है जो काफी गिर गया, करीब 20-30% वो इंडेक्स गिर गया है। वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी जो है वो भी काफी गिरा है, 20% वो गिरा है पिछले कुछ दिनों में। तो पूरा चीन की जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त वो पूरी जिसे मैं कहूंगा कि क्राइसिस में है, उसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर कुछ हद तक पड़ रहा है और इंटरनेट का जो क्षेत्र है उसके ऊपर बहुत भारी असर पड़ रहा है। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी गिरी हैं और ये कंपनीज काम करना शुरू कर देंगी। ये इन कंपनीज के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा चीन के बाहर। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा नया एक अध्याय लिखा जा रहा है ये इंटरनेट
बिजनेस को लेकर, और इसका आने वाले समय में हम बहुत बड़ा असर देखेंगे। शायद भारत को उसका कुछ फायदा होगा, पर फिलहाल ये एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है चाइना में। Very briefly, is there a fear that Western values will creep into the education system of Chinese culture and actually change them? In fact, the Politburo of China has said so. They've said that because of inflow of foreign capital into these education companies, they are losing the domestic values. And in fact, they want to curb this whole thing, which is very strange, because in fact, it is the capital from US which has actually enabled these companies to grow. They have got to raise hundreds of billions of dollars from foreign investors. So that window is going to be closed completely now. And I don't know how this will play out, what Chinese government wants. Some people say they have shot themselves in the foot, but they seem to be pressing on. In fact, today only they have come out with fresh curbs on internet companies, and not just education companies. They have curbed on property companies, they have put curbs on ride-hailing companies, they have put curbs on financial companies. So this is a much wider if steps being taken by Chinese policymakers to curb the freedom of internet companies. I think it is going to become a very significant chapter going forward. Moving on to the U.S. market. On Wall Street, key indices ended higher yesterday, boosted by robust U.S. earnings and forecasts, while data showed the economy recovered to pre-pandemic levels in the second quarter. The U.S. economy grew at a solid 6.5% annual rate in the second quarter. So the Dow Jones Industrial Average rose 154 points, 0.4% to end at 35,085. The S&P 500 gained 19 points, 0.4% to 4,419. The Dow and the S&P 500 hit intraday record highs early in the session yesterday, and the Nasdaq Composite added 16 points to 14,778. Among the latest upbeat earnings news, shares of Ford Motor Company jumped 3.8% as the company lifted its profit forecast for the year, while KFC owner Yum Brands rose 6.3% after it beat expectations for quarterly sales. On the downside, Facebook shares fell 4% as the company warned revenue growth would decelerate significantly following Apple's recent update to its iOS operating system that would impact the social media giant's ability to target ads. Very, very briefly, it appears from the corporate earnings that now there is diversion away from the internet big tech companies to the other companies which have traditionally dominated the Dow Jones Industrial Average. So Arjun, you're right. Last 1 year, if we see, it is the internet companies, the technology companies, which led the charge on the U.S. stock markets. All these companies, the tech companies became more than $1 trillion companies. So yesterday, Facebook said that they might see a deceleration. Amazon has recently said, last night, that they expect the earnings growth to slow down. But although they have sales of about $120 billion in a quarter, but they expect those to slow down a little bit. The guidance is slightly below market expectations. So clearly the tech companies are not going to see the kind of growth they've seen last year. And that money should therefore spill over into cyclicals now. So commodity plays, industrials, these sectors should see higher growth going forward. And technology companies where we have seen very stellar growth and stellar profits, I think that should moderate a little bit. Let's have a look at the next story. आज की एक अहम खबर, नागर विमानन महानिदेशालय ने आज एक परिपत्र जारी कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। परिपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मामलों के आधार पर कुछ मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। सरकार ने कहा है कि 2020-21 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक है। देश ने चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान 689 लाख टन से अधिक और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 433 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने भी खाद्यान्नों की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की है। Moving on to the oil market, global crude oil prices fell today but remained on track to post weekly gains with demand growing faster than supply. While vaccinations are expected to alleviate the impact of a resurgence in COVID-19 infections across the globe,
So Brent crude futures for October shed 20 cents to $74.90 per barrel. U.S. crude futures fell 20 cents to $73.42 a barrel. Meanwhile, a Reuters poll showed oil prices will trade near $70 per barrel for the rest of the year, supported by the global economic recovery and a slower than expected return of Iranian supplies, with further gains limited by new coronavirus variants. Puneet, very briefly, is this the lowering of the forecasted lowering of oil prices? Is this based on the Iranian supplies eventually hitting the market once sanctions are removed? Is that what is being looked at? So that is one of the factors. The other factor, of course, is that Saudi Arabia and Russia have agreed to increase production of oil in the coming months. So clearly, and we already seen the reopening trade happening. So the demand has already gone up. In fact, the US has drawn down its inventories a little bit to meet that demand. So clearly, the oil producing companies plan to increase production going forward, and markets are pricing that in. They're expecting production to go up a little bit. They're expecting demand to moderate, and Iranian supplies will be a very major addition, because they used to produce about 4 to 5 million barrels a day. So Iran is a big supplier. If they come onto the market, definitely oil prices will moderate. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक तेज रही, लेकिन मांग कम निकलने से चांदी की चमक फीकी रही। सोने का मूल्य 294 रुपए बढ़ा 47,442 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर चांदी 170 रुपए घटकर 66,274 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूत होकर $1,830 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर $25.57 प्रति औंस के स्तर पर बनी रही। पुनीत, हम आपका ध्यान सोने चांदी की ओर ले चलना चाहेंगे और सोने की जो कह लें कि आने वाले दिनों में रुझान स्थिति रहने के आसार हैं, वह कैसे हैं? देखिए, हालांकि सोना पिछले दिनों काफी स्टेबल रहा है। यदि रुपए में हम बात करें तो 47,000 से 48,000-49,000 के टाइट रेंज में रहता है। डॉलर की बात करें तो $1,800 के आसपास उसका रुझान रहता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो गोल्ड अभी इसी रेंज में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की हमको आशंका है, और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो उसमें गोल्ड में हम उछाल देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड अभी स्टेबल रहेगा इन्हीं रेट्स के आसपास, लेकिन शायद 5 या 6 महीनों के बाद हम गोल्ड में एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। और जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात करें, बड़े बैंक हैं, वो सभी गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वहां अच्छी तेजी हो सकती है। यदि आम कह लें कि जो निवेशक हैं, आम हमारे श्रोता हैं, वह सोना खरीदना चाहें तो उनके लिए सोना किस रूप में खरीदना उचित रहेगा? यदि जो भौतिक सोना होता है वो, या कह लें कि अन्य जो इसके माध्यम हो सकते हैं, उसमें निवेश करना उचित रहेगा? देखिए, सबसे बेहतर तरीका तो है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो खरीदना चाहिए, क्योंकि एक तो गोल्ड का आपको फायदा मिलता है वहां पर, और वहां पर 2.5% पर ईयर का आपको ब्याज भी मिलता है। तो ब्याज भी मिलता है और गोल्ड की जो एप्रिसिएशन वो भी मिलती है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स उसका सबसे बेहतरीन तरीका है गोल्ड खरीदने का। And very briefly, this bullion buying by central banks, to what extent do you see it raising prices? Very, very briefly. So, central banks don't buy it very aggressively, but it just shows the direction that they expect gold prices to go higher in future, and that is why I think central bank buying signifies going forward we should see the prices go higher, maybe next year. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद विनोद जी। And before we close, a reminder of the headlines. Core industries output grows 8.9% in the month of June, reversing all its gains in the last hour of trade. Sensex falls 66 points, Nifty sheds 15 points. Rupee weakens by 13 paise against the US dollar. And international commercial flights to remain suspended till August 31st, says Director General of Civil Aviation. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.